are like very fresh for me. Like I'm very much enthusiastic, I'm full of energy, and I'm going to touch every new thing I want to. But this week we are going to focus on our final exam, and you're gonna see me while preparing for my final exams. And I'm right now in my 5th semester and a history student, of course, going to do my modern India in this semester. Right now I'm dressed up in my uniform and I'm going to hand my breakfast. Uske baad I'll go to the college. So I'm going to pack my bag. Abhi I'm done with my breakfast. It's 10:20. No, it's 10:52 I think. It's 9:52. I'm so sorry. Like, let me check the time. It's 9:56. I'm going to leave at like complete 10. And I'm going to pack my bag. आज I wrote this book completely. आज मैं इसको return कराऊंगी और इसके बदले मैं आज कोई और बुक लूँगी जो कि मैं आपको कॉलेज जाके बताऊंगी. I'm in the college library. I have reached college right now. And now I'm gonna return my book, and in place of that book I'm gonna get another book. I'm going to return my book. आज हमारी बुक चेंज नहीं हुई है क्योंकि आज मैम नहीं आए थे, तो आज कुछ पढ़ने वाला था भी नहीं उस बुक में. मैंने सोचा कि इशू करवा लेते, क्या पता we're gonna find something new in that, लेकिन it's okay, कल कराएंगे. अभी हम पढ़ने लगे हैं. So let me introduce you guys with my desk mates जो like मेरे साथ डेस्क पे होते हैं. मिनी, जिसको आप जानते हो, हमेशा मेरे शॉर्ट्स में आती है बहुत बार. And we have Mansu with us. We have तनु with us जो कि अब पढ़ रही है, अपने असाइनमेंट्स बना रही है. एंड अभी हम भी पढ़ेंगे. मुस्कान नहीं आना चाहती कैमरे में, तो मैं उसको नहीं ले रही क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू हर्ट एनीबडीज प्राइवेसी. ओह मीट भाभी. Accidentally she just came in my video and I really want to present her. Hello everyone. Hi. Mansi आज coffee लाई है and I'm very much excited to taste it. Oh my god, look at this. This is cup. आज हम करेंगे ये वाला टॉपिक, द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया. लाइक कैसे वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस हुआ. आई एम बैक फ्रॉम 1:30 वाली ब्रेक. और अभी सारे डेस्क वाले चले गए हैं. आधों के एग्ज़ाम है, आधे कोई इवेंट अटेंड करने गए हुए हैं. लेकिन मैंने यही मुझे लगता है कि आज वाला मेरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हो रहा. उसका मतलब एक पार्ट रहता है. अभी हमने कोई इवेंट अटेंड नहीं किया, लेकिन ये फ़ायदा है सीनियर होने का कि हमें समोसे मिल गए बिना इवेंट अटेंड किए हुए. एंड वी आर वेरी हैप्पी. इट्स अबाउट 2:30 एंड मैं यूजुअली कॉलेज से 3 बजे निकलती हूँ, तो मेरे पास 30 मिनट्स हैं, तो मैं थोड़ी सी बुक पढ़ूँगी. वैसे मैंने पूरी पढ़ ली है, बट इफ़ वी हैव डे लेफ्ट विद दिस बुक, तो लेट मी रिवाइज सम चैप्टर्स अगेन. एंड नाउ आई विल गो टू द गार्डन एंड रीड माई बुक. हाई, इट्स इवनिंग एंड आई हैव डिसाइडेड टू कवर माई टॉपिक. मैंने डिसाइड किया था कि आज मैं सुबह 2 टॉपिक करूँगी कॉलेज में, लेकिन हुआ एक ही क्योंकि टॉपिक इतने ज़्यादा लेंदी है. एंड आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन, इफ़ आई एम स्टडिंग स्पेशली द हिस्ट्री, तो मुझे ऊपर से पढ़ने की आदत नहीं है. आई वॉन्ट टू गो इन डेप्थ. आई वॉन्ट टू वाई इट हैपेंड, लाइक हाउ इट हैपेंड, वॉट वॉज द रीज़न बिहाइंड इट, लाइक अलॉट. जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं उसकी डेप्थ में जाके पढ़ती हूँ, तो मुझे इतना टाइम लग जाता है एक टॉपिक को ही कवर करके. लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी 1 वीक बचा है, तो इतना डेप्थ में तो इंसान तब पढ़े ना जब उसके पास 1 महीना पढ़ा हुआ है या 2 महीने पढ़े हुए हैं एग्ज़ाम्स के लिए. ऑल्दो क्या कर सकते हैं. अभी आई हैव डिसाइडेड टू स्टडी राइट नाउ एंड इट्स बीन 8 हो गए हैं अभी. एंड अभी मैं अपना जो एक टॉपिक का सब टॉपिक बचा हुआ है, एटलीस्ट वो ही कवर करूँ मैं. इट्स 9:56 एंड आई एम रीडिंग माई बुक. एंड उसके बाद मैं सो जाऊँगी क्योंकि मैं ऑलमोस्ट लाइक अराउंड 10 सो जाती हूँ. Another day, another morning, and it's Tuesday morning. So I'm ready for the college now. I'm gonna quickly grab my breakfast. It's been like 9:50 right now, and I'm going to leave in like 15 minutes. By the way, let me tell you, I'm standing on the favorite spot of my room because the direct sunlight just enters into my room, and it's the most amazing part of my room, I think. I love this thing. आज I'm having toda with saag in breakfast.
Hi, I am in college and right now I can't record in front of everyone because there are so many students studying in the library and of course I don't want to disturb them. But the thing is we don't have any separate cubicles for every student in this library. यहाँ पे डिस्कशन रूम इसको हम ज़्यादा बोलें तो सही रहेगा क्योंकि एक बड़ा टेबल होता है और उसके अराउंड चेयर्स होती है एंड दैट्स हाउ वी स्टडी एंड लेट्स सी हाउ द डे गोज़. आज का मेरा टॉपिक है इंडिया में न्यूज़पेपर का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, लाइक इंडियन प्रेस. मैंने टॉपिक पहले पढ़ा हुआ, इंटरनल के लिए पढ़ा था लेकिन वो इतने अच्छे से नहीं पढ़ा था, लाइक ऑन स्पॉट पढ़ा था वो मैंने. लेकिन आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम है तो लेट्स सी. मैंने अपनी नॉवल एक्सचेंज करके वपन चंद्रा ले ली है. मैंने थोड़े से टॉपिक्स पढ़े थे जो कि इस बुक में हैं जो कि मेरी स्पेक्ट्रम में नहीं है एंड मीनवाइल आज मैं अपनी स्पेक्ट्रम भी नहीं लाई हूँ तो मैं इस बुक को रखूँगी टिल एग्ज़ाम्स. Came down to collect my roll number slip for the external examinations. शॉल में मानसी के साथ एक्सचेंज किया है. मानसी का शॉल है, मानसी ने मेरा शॉल लिया क्योंकि मुझे शॉल बहुत प्रिटी लगा. It's 3 and I'm at home and back from my college. And if I talk about the day was so unproductive. I literally did very less study. And abhi I'm like so tired. I want to take a nap and I'm just thinking to study at night अच्छे से because I don't usually study at night. And today I want to because I don't want to sleep with regret. Evening and I have decided to study right now and it's been 8:30. Let's see I'm gonna do it or not क्योंकि सुबह के एक यूनिट था उसमें 3 टॉपिक्स हैं. मतलब मैंने हल्का हल्का हर एक टॉपिक को टच किया है लेकिन मैं उसको इतना अच्छे से डेप्थ में नहीं पढ़ा जितना एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल है. Hi, it's Thursday morning and I wasn't able to record the tomorrow Wednesday क्योंकि my health is not doing well. I wasn't able to get up from my bed and go to my study table. Honestly, I didn't even enter in my room by tomorrow because I was just laying on my mama's bed. But it's been like 10:35 and I had my breakfast and I'm carrying these 2 shawls because I really want to prepare myself for the exams. मैं अभी छत पे आई हूँ पढ़ने के लिए क्योंकि नीचे मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी. I'm feeling way better than tomorrow and it's 8:30 and I think that I should study right now but I really don't want to. But I think right now I'm just procrastinating everything because my health is just getting fine and just make my body feel energetic once again. But still I want to postpone everything on the morning. Like I'm just thinking that I should create a to-do. Meanwhile I'm on a very interesting topic of modern India. But still, I want to shift everything on morning. I just selected that I'm gonna complete everything in morning. I'm so sorry for that. Like I really don't want to do that. I think I'm really not supposed to do this thing, especially in my final era. I'm just thinking that okay, tomorrow it will gonna be a new day because I'm just recovered right now completely. I'm going to make my to-do and uske baad I'm gonna sleep. Good night. Hello, it's Friday morning and I'm feeling very energetic. वापस से like I'm feeling so much grateful that I'm just getting into my health conditions back, like a good health condition, and I hopefully gonna do something great in this day and I hopefully gonna like utilize this day in a better way. So it's like 9:41. अभी मैं जल्दी से freshen up हो जाऊँगी and I'm gonna sit down on my table. Firstly, I'm gonna clean my table because it's like really messed up. We just received the wedding card and मेरी मम्मा उसको पढ़ रही है अभी. Mama, you want to say hi to my vlog? No, she's not interested because she is interested in her wedding, not her wedding. Seriously. I don't know why मैं इतना बेफालतू का रिकॉर्ड करती नहीं हूँ बट आज मेरा मन कर रहा है क्योंकि मैं एनर्जेटिक फील कर रही हूँ ना, इसीलिए. Don't judge me. I'm completely freshened up and now I'm gonna do my breakfast. धूप में मैं छत के ऊपर आई हूँ अभी. So I'm going to have this दाल वाला परांठा, this sun. So I'm back on my table and we are getting ready for the first slot, the study
of this day. And let's hope कि सब कुछ अच्छा हो, and let's make this day the useful one. And yeah, the topic we are going for today totally revolves around Raja Ram Mohan Roy, because he is the one of the most prominent leader and the first prominent leader of modern India. And under him I'm going to study about his Brahmo Samaj and all the practices he just made to stop everything, like the all 19th century, the Indian Renaissance, that's all. It kind of interesting, but I just want to study these topics like so deeply, and I don't know if I'll go to or not. Hi, it's 3:49 and I had my lunch after completing down my study sessions, and uske baad I was just thinking that what should I do next. Maybe I'll gonna read some book, but then I thought ki I don't have any new book to explore, and then I just thought ki it's been so long, I had just got this iPad and let me use it in my way, because I'm a big drawing girly. As you can just see behind my wall, it's just all done by me, and I thought ki let's do coloring. Draw this character, Coraline Johns. It's like a character from a movie. I'm giving her brown hairs instead of blue one that she really owns. It's just how it turned out, doesn't matter. It just look messed up क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी ख़त्म किया सब इसको, बट मैं कभी ऐसे अच्छे से ड्राइंग करूँगी इसके ऊपर. Like it's about 8 p.m. and I'm planning to study right now. Ending my day with making to do for tomorrow, and right now it's like 10. I'm going to sleep. Everyone, it's Saturday afternoon and it's been like 12:23 and in this 5th semester we have 5 majors. तो मंडे को मेरा मेजर फर्स्ट का एग्ज़ाम है. तो रात को आई वॉज स्टडिंग नॉट फॉर मेजर 1 बट फॉर मेजर लाइक 3rd. मेरा मेजर 3rd का सिलेबस अभी रहता है थोड़ा सा, लेकिन आई वॉज लाइक सो मच इन टू द रीजन बिहाइंड इट, like I wasn't able to go for other topics because I was studying 19th century India and I was studying it for the very first time. Like I studied last time in my 12th class I think, लेकिन वहाँ पे इतना डेप्थ में नहीं दिया हुआ था, दिया हुआ था लेकिन मैंने उसको इतना डेप्थ में नहीं पढ़ा. एंड कॉलेज में आई एम एबल टू रीड ऑल ऑफ दिस 19th century अच्छे से, लेकिन आई हैड टू कीप दिस थिंग इन माई माइंड कि मेरे एग्ज़ाम मंडे को है, लाइक तो आई हैड टू प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो. एंड आज मैं करूँगी सिर्फ मेजर 1 का, एंड कल संडे है, कल भी मैं मेजर 1 का ही करूँगी. एंड आई एम जस्ट स्किपिंग ऑल ऑफ द मेजर 4 and 3rd. एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि आई हैव लाइक 4 holidays in between every exam, so I'll gonna manage everything in that exams also. So let's study now. I just shifted to the bed and I'm studying here because I just had a break in between, and उसके बाद I came to the bed. And right now it's been like 2:45. There's one thing I really want to share with you all. I'm stuck in one topic. Not even stuck. I just want to share that I am so much interested in that topic. I want to do that topic like so deeply. I'm watching every YouTube video. I'm visiting every website like to grab more about that topic. Like मुझे बहुत interesting लग रहा है वो topic. 19th century is like full of so much interesting things, okay? And but for what I was supposed to sit here and study, that I'm not doing. Hi, it's 5:30 and thank you so much. I just want to say thank you so much for just staying in my video for this so long. Thank you so much. I hope that you find something that you have stayed so long, and that was all about my week. Since I'm a very new person in this, I don't know how I recorded myself from Monday to Saturday, and you guys watched it. Thank you so much. Thank you so much for being with me. And Sunday, Monday ko I'm going to give my first major exam, and that was all about it. Thank you so much.